A very good morning, students. Welcome to Social Science online class. Students, today we are going to start chapter 24, Prejudice, Discrimination and Inequality. Okay, as you remember that in the last chapter of civics we have read about the diversity in India. Now, what was the concept of diversity? Why it was very important to our India? The aim is to show that of diversity is to the difference can lead to discrimination. Okay, we have studied about complete about the diversity, and this diversity is due to the different cultures, different religions, but then also our India is united. So now today we are going to start first our topic prejudice and discrimination. Discrimination, as you know that the word discrimination, it means that भेदभाव है ना. एंड जब यू हैव अ डाइवर्सिटी, जब आपके भिन्नताएं होंगी हमारे कंट्री में, then it may be rise discrimination also. Now diversity, as you all know, that exists because of historical and geographical factors, and this diversity जो है is always not appreciated. Sometimes it creates some problems also. Okay, we find people being discriminated against on the basis of their skin color, race, caste, language, religion और gender. हम देखते हैं कि लोग जो है वह उनके साथ भेदभाव किया जाता है कलर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है ना, लैंग्वेज को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. या हम कह सकते हैं हम अपने समाज में लड़का लड़की को लेके भी भेदभाव करते हैं, ठीक है. और ये सारी द प्रैक्टिस ऑफ दिस मेकिंग दिस डिस्टिनेशंस एंड ट्रीटिंग पीपल लेस फेयरली इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन. और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेशन. And how this discrimination emerges? This discrimination emerges due to prejudice. Okay, prejudice के कारण ये सारी discriminations हमारे अंदर जो भेदभाव की भावनाएं आती हैं. Okay, we start discriminating the people. Now I am telling that due to the prejudice and stereotypes, this discrimination arises. Now, what is the discrimination? Prejudice. In simple way, you can say that prejudice is an unreasonable opinion about a person who is formed without much thought or knowledge. जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जाने बिना हम जो उनके लिए एक थॉट, एक इमेज बना लेते हैं, that and due to that some beliefs which we make about the people, some false beliefs, and due to that we create a new image of that people. वो prejudice कहलाती है. That is known as prejudice. It is based on the false opinion and beliefs that exist in people's mind, as I told you now. Okay, this prejudice results in dislike. जब हम किसी के लिए गलत दिमाग में भावना बना लेंगे, इमेज बना लेंगे, तो नेचुरल हाउ वी बिहेव विद देम, वी विल बिहेव विद देम नॉट इन अ गुड मैनर. ओके, एंड आवर ओपिनियन फॉर हिम और हर इज ऑल्सो नॉट गुड. सो this, I think that now you have understand what is the prejudice and how discrimination. When prejudice arises, then how naturally discrimination comes. Okay, so discrimination is created by the prejudice only. When we are prejudiced, जब हमें किसी के लिए गलत कह सकते हैं कि इमेज, गलत भावनाएं जब अपने अंदर आ जाती हैं, तो we do not give people the respect that all the human beings deserve and entitled to. Now, as I told about the prejudice, now I am telling you some definitions of the prejudice. What is a prejudice? A simple idea of a particular type of person. किसी भी particular person के लिए जो हम एक idea बना लेते हैं, that comes the prejudice. Judging someone negatively without knowing them, बिना किसी को जाने उसके लिए जो हम judgment बना लेते हैं, that is this prejudice. Now, a person group who is made to bear the blame for others or acting on a negative judgment. These all are prejudice. Now, prejudice in our daily lives. These are examples.
that how prejudice in our daily lives work. Prejudice against disabled people, physical and mental disabilities. Second, racial prejudice, the most dominant race Chinese against of other races. मतलब है ना, जब हम है ना रेशियल रेशियल मतलब जब हम रेस को लेके, जाति को लेके, ठीक है ना, जब हम भेदभाव करते हैं कि हम इस जाति के हैं या हम उस जाति के ना, class prejudice, more successful or less successful. This also comes in the our daily lives. These all are examples of our daily lives prejudice, and prejudice against the less gifted and talented also. Now next is, what is a stereotype? Stereotype. You can say that stereotype is a fixed idea that people have about someone or something which is often not true. हम कोई भी अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेते हैं पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है. दैट इज नोन एज स्टेरियोटाइप. ओके, दैट इज नोन एज स्टेरियोटाइप. Now, stereotype are generalizations about a group of people whereby we attribute a defined set of characteristics to this group. Or a stereotype is a popular belief about a specific type of individuals. Just an example I am giving that um, we say that boys do not cry, they have they have no pain, like this. Girls play with doll only, boys don't play with doll. These all are stereotypes. जब हम बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं, लेकिन जब लड़कों को लगती है, चोट आती है, तो उनको भी पेन होता है एंड दे ऑल्सो क्राई. लेकिन हमने ये हमने एक धारणा बना रखी है कि मर्द को दर्द नहीं होता. लाइक दिस आर द एग्जाम्पल्स. लड़कियां जो हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं और ये स्टेरियोटाइप्स हैं. ये सारी बिलीव्स किसकी है, ह्यूमन बीइंग की हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, गर्ल्स को लेके या पर्टिकुलर बॉयज़ को लेके एक बना दी गई हैं, ठीक है. और उसी स्टेरियोटाइप से रहते हुए हम किसी के साथ भी अनफेयर मैनर से बिहेव करते हैं. वी आर नॉट ट्रीटिंग पीपल इन अ गुड वे. ओके, हम उनको ना समझने की कोशिश करते हैं, ना उनका रेस्पेक्ट करते हैं. बिकॉज दिस स्टेरियोटाइप्स आर इन आवर माइंड दैट ऑल दिस वर्क टुगेदर. और भी आप अपने समाज में, इन आवर सोसाइटी, you can see there are many examples of stereotypes, okay, which you if you notice, you will see that in our society only there are so many stereotypes which are working in our daily life. Okay, so I think that it is clear to you all that what is prejudice, what is stereotypes, and what is discrimination. Okay, these three are different, but they are but all three are connected to each other. Okay, so in our next class we will continue this chapter. Thank you, students.